Alright, in this lesson, we're going to be working with electromagnetism again. Okay? Last time we, जो आप अगर आपने मिस किया, you can also watch the last video. So it's already uploaded. So last time we were studying something known as electromagnetic induction. Can you share what that was all about? कुछ अगर आपको याद हो. So what was what was electromagnetic induction about? The process through which an EMF is Inducted. inducted. You're mumbling, my dear. The process through which an EMF is inducted in a conductor across a charging magnetic field. Okay, fine. So it's a process by which an electromotive force, voltage is produced when a conductor cuts some magnetic field lines of force, right? Yes. ठीक है? और उसके हवाले से हमारे पास दो laws भी थे. What were the two laws that we studied? Lenz's law और एक था Faraday's law, I think. Faraday नहीं, वो Faraday. Faraday's law. जी. So what were they about? Faraday's law था the magnitude of electromotive force produced is proportional to the rate of cutting of lines of flux. Alright, so in other words, the greater the rate of cutting of those field lines of flux by a conductor, the greater the voltage will be produced. है ना? Yes. That's what it means in other words. और एक second law जो आपने state किया है, Lenz's law. Lenz's law. Can you tell me what that's all about? The direction of induced current is always such that it opposes the change causing it. Fantastic. Right. So that was briefly an introduction to electromagnetic induction, the process by which you can go from kinetic energy to electrical forms of energy. And of course heat, because wherever there's some friction, there's bound to be heat, right? The motion to hai na, relative motion between the parts that make up the motor or the generator, whatever. In those cases में heat produce होगी आपकी. Alright, that's perfect. Well done. Now I'm going to relate this story to what we covered last time, जो DC motor के time पे हमने जब study किया था motor effect. Yes. So I'm going to relate our storyline to that. ठीक है? When we studied the DC motor, सबसे पहले we studied the theory behind that. We said, okay, it's based on something known as the motor effect. We discussed and we explained what was happening, सारा कुछ हमने जब कर लिया. Then we summarized that theory, the motor effect, into something known as Fleming's left-hand rule, right? Yes. And then when we had that summarized version, Fleming's left-hand rule, we moved on to something known as the DC motor, right? So it was an applied context of the Fleming's left-hand rule. We were using Fleming's left-hand rule to find out the directions of the relative directions of the magnetic field lines, the direction of the conventional current, and hence the direction of the motion that would be caused during it, right? So this time we're going to follow a similar pipeline, okay? A similar storyline. We have the theory behind it, which is what we did in the last lesson, okay? Electromagnetic induction. जो हमने किया था, I showed you how याद है ना एक डेमोन्स्ट्रेशन दी थी एक मोटर के साथ और गैल्वेनोमीटर के साथ. Yes, sir. Yes, sir. Right? So I showed you, I demonstrated how an EMF can be produced when some field lines of flux are being cut over a period of time. ये हमने सारी चीज़ हमने theory कर ली. Now we're going to move on to a summary of what we learned in the theory section, which is Fleming's right-hand rule. This is different now. ठीक है? एक left था, दूसरा वाला right है. Same. And ऐसा ही है. yes, very good. And this time we're going to use that in an applied context with the context of an AC generator. अच्छा, so मुझे दिखाएं all of you Fleming's left-hand rule. What does it look like? Left hand. Left-hand. Very good, perfect. Fleming's right-hand rule is a mirror image of that. ठीक है? It's much the same way. It's a mirror image of that. So you can see obviously from the way I'm holding my fingers, that the direction of the index finger is the same. Okay, so that hasn't changed. The index finger represents, what does it represent? 8 seconds. Current. Magnetic. No.
the direction of the Magnetic. magnetic field. right? So from north to south, very good. What does the thumb represent? Force. Movement. Current. Flow of current. Motion. Motion or the force, Scam? right? So that direction remains the same. What's the only thing that's changed? The magnetic Look at my field. fingers now. The Magnetic field. Direction. Which finger is the only one that has changed? Direction. That's not going in the same direction. direction of current. The direction of current. So my middle finger has changed directions, whereas the other two fingers remain the same. So the middle finger, which represents the conventional current, is now in the opposite direction, according to the Lenz law, तो right? यहाँ पे तो So- opposite नहीं है. नहीं opposite direction है. पहले जिस तरह से पैरेलल होना चाहिए वरना दोनों fingers में. कौन सी वाली दो fingers? सर अगर नहीं दोनों opposite, एक downwards है और एक upwards है. It's a direction. The direction is changed, right? It's opposite now. So this basically reflects वो जो हमने लेंस लॉ हमने स्टडी किया है कि लेंस लॉ क्या कह रहा था? The opposite direction. direction होता है current and Change causing it. So the current that's produced will always be in a direction such that it opposes the change of the current, right? So this is what it reflects. ठीक है? It's in the opposite direction this time. Don't get confused between the two rules. अच्छा. So over here we've got a diagram describing how the AC generator works. देखिए, there are two sorts of sources of electrical energy. ठीक है? एक होता है जो कि डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करता है, दूसरा होता है जो कि ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है. व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ करंट फ्लो? ऑल्टरनेटिंग में क्या होता है, डायरेक्ट में क्या होता है? Direct flows in one direction only. So direct current flows in one direction, right? Alternating. Can it change in magnitude over a period of time? Yes. No. alternative can change and direct can't change. So direct current stays at a constant magnitude and a constant direction. Doesn't change direction and doesn't change magnitude. Yes. Whereas alternating current changes both its magnitude and its direction periodically. ठीक है? Periodically means after a fixed interval of time. The whole cycle repeats. जैसे कि हमने time period में याद study किया था waves में, similar to that. ठीक है? So let's start by describing what's going on. First thing I want you to note, using your Fleming's right hand rule, can you tell me something about the direction of the force, the index finger and the middle finger? Can you tell me कि सारे same direction में हैं? So all are same नहीं है. 90 degrees to each other. So all of them are at 90 degrees to each other. So they are all mutually perpendicular, in other words, right? So the direction of the force, the direction of the magnetic field and the direction of the conventional current are all mutually perpendicular to each other. So it only works when all of them are at 90 degrees to each other. It doesn't work when they are no longer at 90 degrees. Say for example, they're in the same direction. So अगर parallel हो गए तो फिर काम खत्म. So, how do we differentiate के right hand rule or left hand rule? When do we apply them? किस तरह So differentiate करेंगे? when you're talking about the motor effect, so anything to do with motor. So you started with electrical and now you're going to motion, kinetic. So you're talking about the left hand rule. And from kinetic to electrical. और जब आप kinetic to electrical में आ रहे हैं, तो इसमें so now exam you're में question किस तरह आएगा समझिए? So for example, if you're starting with an electrical current, maybe a DC motor, maybe a charge that's flowing through a magnetic field. Remember how we covered that as well. So all of that, you have a current first and then some motion will come out as a result. So all of those discussions would be with the left hand rule. So you just have to remember that. ठीक है? और दूसरे वाला क्या है कि you starting with motion. There was no current before. You started with kinetic energy and this time you're producing electrical forms of energy. So that's with the right hand. ठीक है? Personally, I'm a right-handed person and I tend to do things with my right hand a little more easily. I have a tendency for that. तो जब difficult task होता है, I prefer to do it with my right hand. ठीक है? And my personal way of remembering this is कि generating things, creating things is easier. So when you're generating electricity, generating is harder
उल्टा मैंने बोल दिया. So generating, producing, creating things, designing things, that's a harder thing than breaking it, right? So when you're creating, when you're producing, when you're generating electricity, so that's a hard task. It's not really a hard task because it's just a way of remembering for me. So that goes with the right hand. Okay? It's just my personal. So you could have anything you like. आप अपने मर्जी के तरीके से इसको याद रखें. That's not an issue. ठीक है? अच्छा. So the first thing to note is that when the direction, when the field is parallel to the motion or to the direction of the current, then there would be no induced current, right? ये हमने इससे भी अभी हमने डिटरमाइन किया, ठीक है? And जब आपस में 90 डिग्रीज पे हो जाएंगे ये सारी चीजें, तो that would be the point जहाँ पर maximum induced current होगा. हमने ये चीजें भी फिलहाल figure out कर ली है ना? Alright, so let's begin. Over here we've got an external magnetic field. असली तौर पे this is just a single coil with an axle for rotation, ठीक है? And the coil is supposed, a single coil is supposed to be rotating through. Again, I've shown them in four different phases. So the same coil, मैं थोड़ा सा slide करके जो है मैंने different positions पे उसकी picture बनाई हुई है. And here's the coil as it rotates at 90 degrees. ठीक है? So from one position to the next position is a rotation of 90 degrees in other words. ठीक है? Yes? अच्छा. Say for example, we start at position 1. We start at position 1. Right now, the coil is at its fixed position. मतलब nothing is going to happen. We're talking about the lengths over here. ठीक है? ये जो AB और BC की हम बात कर रहे हैं. We're not talking about the vertical components over here. ये हमारा आपके लिए इस तरह से ये sort of irrelevant है. ठीक है? We're talking about the other component. So this component right now is parallel to the direction of field lines. Can you see that? So BC and AD here, they're parallel to the direction of field lines. It's kind of like this. Perhaps I can discuss to उठा लें. So this part and this part. Remember this. This is a very simple form. It's simplified form of AC generator. This is not the actual thing. Actually, this is one turn followed by another turn followed by a third turn. So they're successive turns. है क्या? Kind of like 1, 2, 3, 4 and क्या है? these are different stages. वो जो आपने ड्रॉ किया हुआ है वो किस मटेरियल से है? क्या चीज़ हाँ? क्या है? So this is a wire. ठीक है? It's a coil of wire. तो अगर मैं ये different boards को उठाता हूँ, so it's kind of like these boards together. ठीक है? तो this one board is like one turn of a wire. The second board is like the second turn of the wire, and so on. This is what's going on. ठीक है? So over here, as the magnetic field comes from the left to the right, look at this portion over here, B to C and A to D. Are they at 90 degrees or are they just this surface of this coil as it goes like this? Is it just parallel? They form 90 degree angle. फिर से देखें. Sir, it's मैं इसको parallel. थोड़ा easy कर देता हूँ. Try to find another one. जो भी नहीं है फिलहाल के लिए. So over here, ये देखें. This is the surface of the coil. ठीक है? So you've got many turns. Like this. Sorry, like this. ठीक है? And all of those turns together, wound together, they form a sort of surface now. ठीक है? So as the field lines go from left to right, तो ये surface जो है, is it in the same direction of the field lines or is it at an angle of 90 degrees? So they are parallel. हाँ? Parallel. Same direction. Parallel. नहीं समझे? समझ आ गई सर. थोड़ी मुश्किल होगी. फिर से देखें इस तरह से. You have field lines going from left to right, and all of these, this is one turn of a coil. This is a second turn of a coil. There's a third turn of a coil. There's a fourth turn of a coil, and there's a fifth turn of a coil. So all of these coils are placed stacked, sort of, next to each other, like this. And the coil
will then rotate afterwards. ठीक है? So अब आप मुझसे बात ऐसे करें। रोटेट करेगा या ऐसे रोटेट Clockwise, नहीं मतलब वो क्लॉकवाइज ठीक है लेकिन like this. फ्रॉम BC to AD या CB to BA So this position would rotate like this. ठीक है? अच्छा, फिर से देखिए. So you've got this flat surface now with all of these turns of their coils, and this flat surface of all of these conductors is in the same direction as the field lines. There is no cutting going on. है ना? So in this case you have 0. सर मुझे लगा था ये चार कॉइल्स हैं, चार डिफरेंट कॉइल्स हैं। ठीक है? You have 0 EMF being produced. You start with a 0 point. Okay, moving on. Now let's move to position 2. So the coil is rotated slowly. मैं इसको स्लो करता हूँ और clockwise direction में rotation होगा. ठीक है? So clockwise direction में I started rotating until I reach this position. Okay? So this time all of these coils, all of these turns that were stacked one on top of each other, all of these turns, एक coil, फिर दूसरा coil, फिर तीसरा coil. This time this flat surface with all of those turns occurs at an angle of 90 degrees to the direction of the fields. इस बात की समझ आई? Right? Okay, fine. So this time because the direction of the field lines is at 90 degrees to the direction in which the current would flow, flat surface, so you would expect a maximum cutting to occur. ऐसी बात है, जी है ना? Maximum cutting होगी ना, क्योंकि अब तुम 90 degrees पे आ गए. That's where it reaches its maximum. तो fine. इधर मैं मैक्सिमम पे ले आता हूं उसको. ठीक है? So it starts to look थोड़ा सा और अच्छे तरीके से इसको ड्रॉ करना राउंड है. होना चाहिए। तो it starts to look maybe something like that. ठीक है? चलिए, let's continue. The cycle continues और अब आप नोट कर रहे हैं कि ये जो फ्लैट सरफेस है, what matters is कि ये कितना इसका फ्लैट सरफेस 90 डिग्री के साथ कोइंसाइड करता है, यानी कि इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट कितना आ रहा है ना? कि नहीं आपको आ रही है समझ इस चीज की? आई विल रिपीट. ठीक है? आपको समझ आ रही है? अच्छा. सो वी आर इंटरेस्टेड इन कि इसका फ्लैट सरफेस कितना आ रहा है, यानी कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना आ रहा है. अगर हम इसकी फ्लैट सरफेस किसी और डायरेक्शन में कर देते, इसका वर्टिकल कंपोनेंट थोड़ा कम हो गया, तो इट मींस कि वी आर गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू द पैरेलल सिचुएशन अगेन. दैट्स वेयर इट रीचेस द 0 पॉइंट अगेन. ठीक है? सर तो बिलो द ग्राफ कब जाएगा? सो वी कर दैट. सो ओवर हियर इट रीचेस 0 अगेन. अब बिलो द ग्राफ जाएगा. You're right. कौन था? Abdullah? Yes, you're right. ठीक है? So now it is parallel again. ठीक है? Okay. This time it continues rotating in the opposite direction. तो you started with this side जहाँ पर ये thumb pins मैंने लगाए हैं. Thumb pins जहाँ लगे हैं. You gave it one rotation, so the thumb pins are facing upwards. Position 2. Then you rotated it further. So the thumb pins are now facing the left hand side towards your right hand side. ठीक है? And then when I rotate it further, this time thumb pins won't face upwards; they will face downwards in the opposite direction. है ना? So though that flat surface, जो कि upwards face कर रहा था, this time it will face downwards. ठीक है? जितना मैक्सिमम ईएमएफ गया ये तो टॉप पे गया मैक्सिमम था, होगा, but in the opposite direction. तो जितना वहाँ मैक्सिमम ईएमएफ गया था ऊपर, Say for example 5 volts. so अब अब this will be यहाँ पे minus Is 5 the now. minus 5 पे आएगा? Yes, the amplitude would remain the same. सर तो कैंसिल हो जाएगा फिर जो करंट प्रोड्यूस हुआ था और नेगेटिव से। Very good, good observation. इसका कौन आंसर देंगे? क्या चीज़ क्या सुनो नहीं?
वो से पूछ रहे हैं कि वो इट कैंसल आउट, तो जो आपने एक तरफ प्रोड्यूस किया था वो आपने अपने हाथों से तबाह कर दिया. लेट्स कंप्लीट द साइकिल एंड विल डिस्कस दैट. सर तो डेफिसिट आ रहा है ना. ठीक है, विल डिस्कस दैट. इस साइकिल तो को न्यूट्रल हो जाएगा, ऐसे एंड पे न्यूट्रल हो जाएगा. इस पॉइंट पे तो एक मैक्सिमा था इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एंड द होल साइकिल वुड रिपीट, जहां पर वो फिर से एक जीरो पे आ जाएगा, वेयर इट बिकम्स वर्टिकल अगेन, राइट. तो वही सॉरी नीचे की तरफ पिंस थी और फिर से वो वर्टिकल पे आ गया. नाउ यू स्टार्टिंग एट इट्स ओरिजिनल पोजीशन के पिंस टू द लेफ्ट एंड द होल साइकिल वुड रिपीट. ठीक है. चल ये मेरा पैरेलल एक्सप्लोर होता है जिसकी वजह से मैं डेली वीडियो बनाता हूं. अच्छा, सो यू आर सेइंग, हां न्यूट्रल हो जाएगा. न्यूट्रल हो जाएगा. ओके फाइन. ताहा आल्सो थिंक्स कि न्यूट्रल हो जाएगा. आपको भी लग रहा है कि न्यूट्रल बात हो जानी चाहिए ना? मैं इधर गए, जितना उधर गए थे उतना इधर आ गए. सर न्यूट्रल होना तो चाहिए. न्यूट्रल होना तो चाहिए नहीं, क्योंकि जनरेट इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस होती है. अच्छा, जो प्रोड्यूस की थी हमने वापस दे दी. डायरेक्ट करंट नहीं है सर. डायरेक्ट करंट नहीं है. लिसन, करंट क्या होता है बाय डेफिनेशन? व्हाट इज करंट? Flow of electrons. Not just flow. Flow of electrons from the Flow of negative charge. terminal to the positive terminal. Not just flow. Flow Per of unit time. Per unit time. ठीक है? So it's the rate. It's how fast. It's the rate of flow of electrical charge per unit time. So how many coulombs of charge are passing a given point per unit time? Does it state in any place that it's got something to do with a direction? no. No. So the direction doesn't matter as long as there is a flow of charge. Electricity. There is current. Current electricity, right? So similarly, आपका जिस तरह से बल्ब चल रहा होता है, तो क्या होता है? What's the working principle behind a filament bulb? फिलामेंट बल्ब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं फिलामेंट से, जो ग्लो करती है. जो हीट अप करती है, हीट होती Glow. है heat से. Okay, so the filament is a very thin. Heat से glow. It's a very thin coil of wire, like a tungsten wire. ठीक है? And because it's really thin, it's got a really high resistance. And when there's a high resistance, there's bound to be a huge heat loss. आपको पता है कि the energy lost as heat depends on the resistance, the square of the current, and the time, of course, right? So there's a huge heat loss, so much so that the wire starts glowing white hot, right? So does it matter if all of those charges flowed in one direction or the other? Does it make a difference? No. So what if it continually changes its direction? It happens so fast कि typically जो आपके household appliances हैं, आप कभी note करें इसके ऊपर ये जो adapters हैं, charging adapters के ऊपर, you can go and see it over there कि they're typically rated at around 60 hertz, meaning in every second 60 1, seconds. 2, 3, 4, 5, ये जो different seconds हैं, in every second 60 times complete cycle change होगी. So fast you wouldn't notice. लेकिन एक और अजीब सी आपको मैं ऑब्जर्वेशन शेयर करता हूँ. कभी अगर आप प्रोजेक्टर लगाओ ना, पीछे जो होता है ना, ये कंप्यूटर से प्रोजेक्टर हम कनेक्ट करते हैं, और अगर वो भी सेम फ्रीक्वेंसी पर चल रहा है और आपका कैमरा भी 60 फ्रेम्स पर सेकंड अगर कैप्चर करने लग रहा है, तो यू स्टार्ट कैप्चरिंग सम लाइंस इन बिटवीन. कभी नोट करना. तो यू विल स्टार्ट कैप्चरिंग लाइंस इन बिटवीन. सर आप रिफ्रेश रेट के साथ आप चल रहे मोबाइल हैं, स्क्रीन से बिकॉज यू आर कैप्चरिंग अ फ्रेम along the same rate at which it's being refreshed. वो तो आपकी ह्यूमन आई इज टू स्लो टू डिटेक्ट कि हाँ इतनी तेजी से ये हो रहा है, लेकिन the phone would be capturing it that fast. तो वो जो प्ले करता है वो उस तरह से उसको दिखाता है कि लाइंस नीचे से जा रही हैं, ऐसे साइकिल चलता है अजीब सा, है ना. So the fact that it changes direction doesn't matter to us. For a heater, for a lamp, for a bulb, for all our basic household appliances, it doesn't matter. सर ये लाइट भी फ्लक्चुएट करती है. Yes. सर मैंने देखा था जब आप मोबाइल के ऊपर सुपर स्लो मोशन में जाए तब आपको लाइनें नजर तो आपको लाइट फ्लक्चुएट करती नजर आती है, बिकॉज इट्स साइक्लिंग. एक मैक्सिमा, फिर मिनिमा, जीरो, फिर अदर डायरेक्शन. यस, राइट. सो इट डजंट मैटर कि जो डिफरेंट डायरेक्शन में चले. ठीक है. एंड चलो, द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द होल साइकिल रिपीट्स. ठीक है. दिस इज वन कंप्लीट साइकिल. ठीक है. एंड
it's got its own time period just like a wave, so it repeats every this many seconds. So one It's got its own frequency. खराब होती है It's got its own frequency in hertz, and this time the amplitude refers to the EMF or the voltage that's produced, right? बस And of course, indirectly you can also say the current that's produced. क्योंकि जब आपके पास एक वोल्टेज एक डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है तो उसी डायरेक्शन में कन्वेंशनल इज इट पॉसिबल कि लाइट का एक किसी वजह से उसके जो एक 60 हर्ट्ज है उसके चलते हैं तो वो कम हो जाए एंड यू कैन विजिबली changing the frequency. यस Yes, the frequency that you produce depends on the frequency at which you rotate, because this is basically governing how fast the cycle is moving through per second. So the faster you rotate this, how do you change the frequency in a light in a bulb वो तो फिर बहुत सारे different physical, mechanical aspects उसके अंदर आ जाएंगे. How do you limit के continuous, for example, अगर आपके पास एक डैम है, डैम ऐसे ही dam पे आप generator लगा हुआ है. जिस एग्जांपल की कभी वैसे होता है लाइट खराब हो जाए तो यू कैन विजिबली सी कि वो ब्लिंक कर रही होती है आई वाज जस्ट वांटिंग टू नो कि वो फ्रीक्वेंसी चेंज की वजह से होता है Frequency changing. Yes. So for example, आप लोग के जो डैम्स लगे हैं, या पाकिस्तान में भी लगे हुए हैं कुछ डैम्स, right? So this phenomena with the AC generator is used in so many different places. जहाँ पर भी आप एक main supply, alternating current की supply, the things that we get over here, आपके जो sockets में, offices में, schools में, घरों में, ये जो different sorts of electrical supplies हैं आपके पास, main supply जिसको आप कहते हैं, alternating current वाले, they're all produced based on the same principle. Whether it was with a generator at home perhaps, जिसमें आप एक fossil fuel अंदर डालते हैं, उसमें एक piston system just like your car, it starts to rotate an axle, the axle would rotate, the coil in the presence of a magnetic field, there would be some cutting of lines of flux. The greater the amount of cutting at 90 degrees, meaning तो वहाँ maximum पहुँचेगा, different direction में flip होगा सारा कुछ, फिर वहाँ पे पहुँचेगा. सर सारों पे होता होगा लेकिन सोलर पैनल्स में तो मूवमेंट नहीं सोलर पैनल पे जाता है. इसीलिए कभी आप देखेंगे कि यूपीएस के अंदर जो है सोलर पैनल की स्पेशल कनेक्शन दी होती है, वो डीसी आता है. ठीक है. सो आपके पास जो फॉसिल फ्यूल से आप जनरेटर रन करते हैं, डैम्स में टर्बाइन्स आर मूविंग, rotating, cutting those lines of flux. So that's a place where we produce this. Wind turbines, again, the wind blows or flows, and the turbines, they move in a certain, they rotate in a given direction, and again there's a continual cutting of lines of flux. Again the generator is being used. Nuclear reactor में होता है कि a nuclear fission reaction takes place. In the process, a lot of heat is produced. This then boils the water, which gets converted into steam. The steam then passes through a turbine. The turbine rotates, and again the same principle occurs. It's basically the same principle again and again and again in so many different forms. है. सोलर के अंदर क्या होता है? सोलर के अंदर ये होता है कि you've got solar energy that's harvested. I think कि semiconductors के साथ. सर नहीं को Maybe I think कि silicon के साथ. I'm not quite sure. सर वो एक सेल होता है ना जो फोटो तो एक- समथिंग सेल होता है जो हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक सेल होता है जो कि फिर उस सोलर एनर्जी के बेसिस पे फिर वो प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस करता है, बट इट्स ऑल इन द सेम डायरेक्शन. द सेम प्रिंसिपल इज नॉट बीइंग यूज्ड ओवर देयर, दैट्स अ डिफरेंट प्रिंसिपल है ना. सर तो ज्यादा सर्दी में technically ज्यादा the same करंट direction. होगा या ज्यादा सर्दी के अंदर ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा या ज्यादा सर इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन टेंपरेचर, इट्स डिपेंडेंट ऑन द लाइट इंटेंसिटी. सर लेकिन अगर ज्यादा हीट होगी फर्क नहीं तो वो ज्यादा एक्सपैंड नहीं हो जाएंगे सेल्स और नहीं। कम हीट नहीं करेंगे पड़ता अगर वेदर वो जो थर्मल एक्सपेंशन आप कह रहे हैं, हाँ जी तो वो सेल्स के मतलब एक वो तो दूसरे बहुत से मिनिमल चीज है ना. तो करंट मिनिमल चीज, मिनिमल इफेक्ट्स. ठीक है. अच्छा, लास्ट थिंग जस्ट बिफोर लिविंग. अच्छा, ये देखिए. So how do we connect this generator to the main circuit? How do we do that? So there's a coil over here. You want to connect this coil as it moves to the main circuit. अब ये देखिए ना, ये continually move कर रहा है ये सारा कुछ. तो आप अगर एक तार लेंगे तो उसको तो आप समझेंगे कि जैसे हेयर ब्रेड्स या चुटियां जो होती हैं वो बन जाएगी उसकी. सर तो फिक्स्ड वो तो बड़ी problem है. फिक्स्ड और आगे रोटेट होगा वो Okay, that's a good idea. You're somewhere close.
जैसे मोटर के अंदर होता है। Okay, very close. Motor के अंदर you use a split ring to ensure you got the same direction. This time you don't have to do the same thing. You don't have a split ring. You just have a ring. ठीक है? So for example, you break the circuit somewhere here, and black use कर लो मैं, and you take some output. सर उसमें फ्री रोटेटिंग होगा आई गेस पर, या जैसे वो इसमें बेरिंग्स नहीं होते, तो इसमें फिक्स नहीं होगा क्योंकि ऑपोजिट साइड में रोटेट होगा। नहीं And finally over here. पीछे किसी चीज का ग्रिप नहीं होना इसमें। हाँ तो वो फ्री मूव होगा। So over here, let's say कि मैंने कुछ output terminal मैंने create कर दी, ठीक यहाँ है? पे बेरिंग स्टार्ट में बेरिंग So this output terminal is continually in contact with a slip ring. ठीक है? It slips. सुने? इधर देखिए. So मैं एक का केस दिखा दूँ तो आपको दूसरे का केस. ये देखो तो एग्जैक्टली इसके अंदर क्या होता है, मतलब ये क्या है, ये बेरिंग्स के साथ रोटेशन है जैसे वो स्पिनर्स वायर ओवरलैप नहीं होगा। So they are not connected with bearings. लेकिन what happens is कि as the wire rotates, it's still in continuous contact with this circular conductor. It's called a slip ring. सर ये फैंस के अंदर होता है? फैंस के अंदर भी होता है? फैंस में क्यों फैंस के फैंस के अंदर क्या? फैंस के अंदर मोटर होती है ना? सर ये स्लिप रिंग्स ये होते हैं। तो डिपेंड्स के एसी फैन है, डीसी फैन है। अगर डीसी होगा तो उसमें कम्यूटेटर स्प्लिट रिंग होगा, है ना? So like that. So you've got this slip ring, and this wire is basically connected with carbon brushes. ठीक है? The carbon brushes, they connect the moving part with the rotating slip ring. And the problem with that is कि for example अब main circuit पे अब मैं connect करना चाहता हूँ with a bulb, right? So the problem is इस पे मैं connect कर देता हूँ for example. सर तो अगर हम इस जो तो ये brushes हैं, carbon brushes, Sir. that then continue the rest of the thing to the main circuit. Let's say for example एक bulb से connect करना था. So over here the problem is कि ये जो आपने brush अब use किया है to connect with the rotating part, the rotating slip ring, they wear out over time. And when they wear out, because of all that friction और वो carbon brush जो wear out हो गया कहीं पर, so they start to spark. It becomes dangerous. It's not so great. सर जो प्रोड्यूस अमाउंट ऑफ करंट वो भी कम हो जाएगा। Of course, yes. Heat losses ज़्यादा हो जाएंगे, है ना? So we don't like that to happen. सर तो ये कॉइल ऐसे क्यों नहीं मूव करती? हमेशा पैरेलल रहेगा और हमेशा यूजुअली हमारे लिए जो है रोटेटिंग मोशन जो है इजी है ना, टर्बाइन अगर आप लगाते हो तो कंटिन्यूअली फ्लो, लेकिन ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी अप एंड डाउन, हाँ हमेशा